Hare Krishna. Today's video is on a particular shloka in the Bhagavad Gita that teaches us how to do our duty better. This is one of the most important shlokas in the second chapter, the second adhyaya of the Gita. And even if we look at it from a very purely non-religious perspective or standpoint, still we have a lot to take into our lives or imbibe into our lives from this particular shloka. We often find ourselves caught up in situations where it becomes very difficult for us to do our duty. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है, आपका ड्यूटी है टू स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करना. पर लेट्स से अचानक से आपको ये पता चले कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है एंड दैट विल स्टे लाइफ लॉन्ग विथ यू. ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था, दैट्स आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल. बट अगर ये आपके साथ हो तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम तक यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू योर ड्यूटी बिकॉज ऑफ दिस. Sometimes the problem we have at hand becomes too large for us and we get so consumed by it and the misery amounting from it that we assume the problem to last forever. Every person has to go through such a phase in his life, but life does not stop. So how do we go through such phases unharmed and undisturbed? It is through the realization of truth, and the truth is what Krishna is talking about in the Gita. Now, even if you do not believe it to be true, it does not do you any harm for temporarily, voluntarily accepting something as the truth if it ultimately is going to help you in raising your consciousness level and will give you greater clarity. What's the harm in taking a chance? And it becomes even more important and significant in today's times where nihilism and hopelessness are bigger problems and they lead people to commit suicides and take their own lives. So, in the 14th shloka of the second chapter, Krishna tells Arjuna, Matra sparashastu kaunteya sitoshna sukha dukkhadah agama payano nityas tam stitikshasva bharata. Meaning, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are just like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception ocean of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Now, if someone comes up to you and says कि दुनिया में तो बस एक ही सीज़न होता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न तो है ही नहीं, you will say that he is a madman. जहाँ पर समर होती है तो वहाँ पे विंटर भी होती है, जहाँ दिन होती है तो वहाँ रात भी होगी, राइट? ऑल दीज थिंग्स डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम ईच अदर. आप किसी चीज़ को गर्म इसलिए बोलते हो क्योंकि साइड बाय साइड दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो ठंडी है. इफ देर इज नो ऑपोजिट और नो बेस फॉर कंपैरिजन, देन एट्रीब्यूटिंग द वर्ड हॉट टू अ सर्टेन ऑब्जेक्ट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर एट ऑल. We must understand that happiness and distress work in the exactly same way. The reason we are not able to do our duty is because we get bogged down by the negative events in our life, and we get bogged down because we do not accept the harsh reality. And you might think that you are different and you are not one of those people, but look at your own life. आप स्कूल गए ताकि आप कॉलेज जा सको, कॉलेज ताकि आपको जॉब मिल सके, और जॉब ताकि आपको पैसे मिल सके, पैसे ताकि आप उन्हीं पैसों से खुशियाँ खरीद सको. अब वो खुशी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एक फॉर्म होता है जहाँ पे आपको खुशी मिलती है जब आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ देते हो उन्हीं पैसों से, या फिर उन पैसों को यूज़ करके आप एक अपना ड्रीम कार या ड्रीम हाउस खरीदते हो तो आपको वैलिडेशन या सेटिस्फैक्शन मिलता है. पर फिर भी आप फुलफिल्ड नहीं रहते हो बिकॉज यू आर रनिंग आफ्टर इटर्नल हैप्पीनेस, नित्य सुख, इटर्नल हैप्पीनेस. बट आपको क्या मिलती है? अनित्य हैप्पीनेस, अनित्यास, राइट? यू रन आफ्टर this happiness, this eternal happiness in this material world, even after theoretically knowing that it's irrational to run after them because distress has to coexist. As I said earlier, happiness and distress जैसे work करता है, distress has to coexist, whether in the same time frame or in differing time frames over the duration of your life. Isn't that hypocrisy? और यही फॉल्स एक्सपेक्टेशन जो हम अपने आप में बांध के रखते हैं, दिस लीड्स टू फर्दर डिसल्यूजनमेंट एंड लैक ऑफ ड्यूटीफुलनेस. More importantly, focus on the words in the verse that say,
आगम पायनो अनित्यास। आगम जो आता है, अपायनो जो चला जाता है, और अनित्यास जो टेम्पररी है, जो शाश्वत नहीं है। तो ये सुख दुख लाभ हानि ये सब आता जाता है, सब आता जाता है, सब टेम्पररी है, सब अशाश्वत है। तो इसमें दिमाग ही काय को लगाने का, इसमें इतना खोची काय को करने का। डू यू एवर थिंक डीपली अबाउट द लास्ट Uber driver that you had in your last ride? No, because you know for a fact that the relationship that you shared with that Uber driver at that point of time was purely transactional and temporary. We are hurt when we expect things to be eternal and not temporary. We expect things, whether it be a human being that we love or be it abstract concepts like happiness that we run after, when we expect them to be eternal and not temporary, that is when we are hurt. So what is the solution? The solution is very simple. Start changing your perspective, shift your focus, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने फोकस को वहाँ से हटाइए जो टेम्पररी चीज़ें हैं और वहाँ लगाइए जो परमानेंट है, और परमानेंट कृष्ण है. Start engaging in a spiritual life, because trust me, a spiritual life can save you from the greatest of dangers and the greatest of fears, and it has saved me from almost ending my life. Trust me on this. ये मैसेज को समझिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली अभी आप जिस स्टेज में उसके लिए ये समझिए कि कैसे वो चीज़ें जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो टेम्पररी है एंड दे आर नॉट वर्थ रनिंग आफ्टर. और साथ ही साथ ये जो डुअलिटीज़ हैं लाइफ के, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस एट्सेट्रा, इसको टॉलरेट करना सीखिए. बिकॉज कृष्ण सेज ताम तितिक्षस्व भारत, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन. और अर्जुन कौन है? मैं हूँ, आप हो, हम सब अर्जुन ही हैं. तो लेट्स कीप दिस इन माइंड, लेट्स कीप दिस मैसेज इन माइंड. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ. हरे कृष्णा.